happy to be once again amongst all of you. I sincerely thank you for kindly coming and offering your precious time in these very precious human lives to attend our auspicious Sunday festival at Sri Radha Gopinath Temple. It is a very great privilege for us to have the chance to serve you in whatever small way we can. We should never take service to the devotees to be a job or a chore. It is a privilege. It is a blessing coming from Krishna. And how we appreciate that blessing with a grateful heart is how Krishna will reciprocate with us. It is only after millions and millions of births, by inconceivable good fortune, that we are allowed to personally serve the servants of the Supreme Personality of Godhead. Let us treasure this blessing as the highest ideal of our lives. We should be so grateful if any devotee is willing to accept service from us, whatever that service may be. In Krishna consciousness, there is no high and low, as in material life. High and low is based on one's sincerity, one's integrity, one's dedication, one's gratitude, and one's love. Those who live by these holy principles, they are high in the eyes of God and in the eyes of those who love God. Today we have very special guests amongst us who we're also grateful had come. I will give very brief introduction because if I speak what is in my heart, it will be very quickly time for prasad. Better, Krishna reveals their opulences by the words coming from their own mouths. We have one of our dearest well-wishers, friends, Srila Bhakti Charu Maharaj. He's one of the most exemplary and deeply loved devotees by Vaishnavas all over the world. People naturally love him because he loves people. He's given his heart to Srila Prabhupada's service for the past over 30 years. Faithful, dedicated. His projects are glorious. His love for Prabhupada is being manifested in people's hearts by his Abhay Charan
series shown on television, watched by people all over the world. His beautiful devotional singing. Wherever anyone goes in the world, they will hear the CDs and tapes of Bhakti Charu Maharaj playing. From the Samadhi of Mayapur to the Pujari room of Los Angeles. And his Vaishnav qualities and his dedication to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada are simply glorious, astounding. Let us welcome His Holiness Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. We also have very dear friend and well-wisher, Panditji Maharaj. He's born and raised in a little village called Chiksholi, the place where Chitrasaki appeared in this world, her village. It is in the forest of Gabravan, just behind Srimati Radharani's eternal home in Barsana, Braj Bhumi. By Sri Radharani's mercy, I have had the pleasure and fortune to know these people for about 33 years. When I was just a little beggar roaming around Braj, they would give me their rotis and their love. And I learned much by seeing their natural, spontaneous devotion. They've risked their lives to protect the integrity of Braj Bhumi. Materialistic people were trying to cut all the trees out of Gabravan. And these are not gentle businessmen with business suits. These are gundas, dacoits, people who will kill for a few paisas. But they stood up, really risking their lives to protect the integrity of the mountains, the trees, the holy places of Braj. Each year he goes to America to do Bhagavad Katha, to raise funds where all of it, everything goes to restoring the holy places of Vrindavan. Let us welcome Panditji Maharaj to Sri Radha Gopinath. And of course we know his Guru Maharaj, Ramesh Babaji Maharaj, has always been a very kind, merciful sadhu to all of our devotees over the years. We now request Srila Bhakti Charu Swami to illuminate our hearts with his devotional. Hare Krishna. I was actually requesting His Holiness Radhanath Maharaj to speak, but Maharaj is insisting that I do. And anyway, a few exchanges went on between Maharaj and me, and then finally I had to surrender. So I will try to speak something, because
Maharaj is insisting, and I told him that since he is my senior, I have to listen to him. Especially, I have a portfolio called Vaishnav Etiquette. Before coming to the class, while waiting for Radhanath Maharaj, I was speaking to Radha Krishna Prabhu, and then when Maharaj came, I continued speaking to him with the same topic. And the topic was, what makes Krishna consciousness spread? What inspires people to take to Krishna consciousness? And in this temple, through His Holiness Radhanath Maharaj, that point becomes very clear. And that is what Srila Prabhupada very emphatically presented through his 4 principles. And those principles are Srila Prabhupada's books or teachings are the basis, books are the basis, preaching is the essence, purity is the force, and utility is the principle. Krishna consciousness is a very profound topic. This topic can be quite complicated, quite complex. But the way Srila Prabhupada gave it, it actually became very simple. Yet, Srila Prabhupada's presentation of Krishna consciousness is most sublime and most profound. In simple words, Srila Prabhupada's presentation can be described as, it is so simple that even a child can appreciate it, even a child can understand it, and it is so profound that the greatest philosophers in the world can completely get lost in it. So that is what Srila Prabhupada's presentation is like. Even a child can understand, and even the greatest philosophers of this world can appreciate it. And Prabhupada made one point very clear, that he was not presenting anything new. Srila Prabhupada did not give anything new. Srila Prabhupada simply dictated the message that is flowing since the time immemorial through the chain of disciplic succession, through the chain of self-realized souls, starting all the way from Brahma. So that is what Srila Prabhupada came to give. And Srila Prabhupada was very emphatic, very cautious about one point, and that is the purity of this message. Srila Prabhupada made it very clear, and Prabhupada was very concerned, very cautious about
the presentation of the message must be done in an absolute pure way, that is, without any deviation. Prabhupada used to say that the responsibility of a spiritual master is that he carries the message without any distortion, without any distortion from the message that he himself received from his spiritual master. And that's what constitutes the disciplic succession or the chain of spiritual master and disciples. The original spiritual master is Krishna. He imparted this knowledge to Brahma through Gayatri mantra. By playing his flute, he gave the Gayatri to Brahma. And meditating on this Gayatri mantra, this transcendental knowledge was revealed in the heart of Brahma. That point has been very wonderfully presented right at the beginning of Srimad Bhagavatam. Tene Brahma Hida Adi Kavaye Muihanti Jat Surayaha. Krishna imparted this knowledge to the original Kavi, Adi Kavi, Brahma. This transcendental knowledge, or Dibba Gyan or Brahma Gyan. And this knowledge is so deep and so complex that it bewilders even the demigods. Muihanti Jat Surayaha. And after receiving this knowledge, Brahma imparted this knowledge to his disciple, Narad Muni. It is interesting to note that from Brahma, two disciplic successions actually started. One side is the Prajapatis, who are going to help him with the creation or procreation, filling up the universe with living entities. And the other side started through Narad Muni. Narad Muni did not want to get involved in the materialistic affairs. Brahma didn't mind that this youngest son was not interested in materialistic involvement, of helping him in filling up the universe with progeny or prajas. And one day, Narad Muni saw that Brahma was in a trance and tears were flowing from his eyes. The hairs were standing on end. His body was trembling. Seeing Brahma in that way, Narad Muni could recognize that he was experiencing an inconceivable emotion internally. And Narad Muni, when Brahma came out of his trance, Narad Muni asked him, now, all this while I used to think that you are the greatest personality. You are the supreme. Please tell me, who is there thinking about him? You are experiencing these emotions internally through your meditation. Then Brahma spoke to Narad Muni about the Supreme Personality of Godhead. And in this way, Narad Muni became the link through Brahma of the Bhagavat, or the transcendental knowledge about the Supreme Personality of Godhead and his teachings. And in this way, a disciplic succession started, which is known as Bhagavat Parampara.
We belong to that parampara. Our understanding is that the ultimate goal of life is to understand the Supreme Personality of Godhead and mold our lives according to the instructions of that Supreme Personality of Godhead. The instructions that the Lord Himself gave 5,000 years ago on the battlefield of Kurukshetra, that is Krishna Katha, that is Bhagavad Gita, the words spoken by the Supreme Personality of Godhead Himself, and the foundation of this parampara or this culture is the knowledge about the Supreme Personality of Godhead that have been imparted by the individuals who are very closely related to the Supreme Personality of Godhead Himself. The devotees of the Lord spoke about the Supreme Personality of Godhead. And that is Srimad Bhagavat. In this disciplic succession, in this line, a very interesting phase manifested when the Supreme Personality of Godhead revealed His pastimes 5,000 years ago in the land of Vrindavan. Krishna's Vrindavan pastimes are unusual because in Vrindavan pastimes, Krishna revealed some relationships that were not known to the devotees before. A relationship that is not known to the devotees even in Vaikuntha. A relationship that was not available even in Ayodhya, even in Dwarka. Generally, in the spiritual sky, in Vaikuntha, the Supreme Personality of Godhead is worshipped as the Supreme Personality of Godhead. And everyone else serves Him in awe and reverence, in Aishwarya, with the understanding that God is God and everyone must serve Him with that understanding. And that relationship is Shanta and Dasya. Vaikuntha is the region where only these two mellows are prevalent, Santaras and Dasyaras. But in Vrindavan pastimes, a very unique relationship was revealed by Krishna. Relationship of friendship, parental and conjugal. Now these three relationships with the Supreme Personality of Godhead is available only in Vrindavan, nowhere else. Originally, these relationships are available in the eternal world, eternally in the spiritual sky, in Golok Vrindavan, spiritual Vrindavan. And the topmost region of the spiritual sky, Golok, is manifested through Krishna's Braja Leela, Vrindavan pastimes. Otherwise, it was not revealed. That point has been very wonderfully explained by Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita, that even from Dwarka, one cannot enter into Vrindavan.
Gop Kumar, a cowherd boy who, by the mercy of his spiritual master, was and chanting the holy name, chanting the mantra that his guru gave him, he was making gradual advancement. He went from earth planet to the heavenly planets. Then he reached the highest region of the universe, Brahmaloka, Satyaloka. Then penetrating through the coverings of the material nature, he came to Vaikuntha. And from Vaikuntha he was elevated to Ayodhya, then to Dwarka, spiritual Dwarka. But still his heart was not content. Then one day Narad Muni, when he came to Dwarka, he noticed it, that this particular spirit soul was not fully content, even in Dwarka. So he asked him, what's the matter? You are in Dwarka. You are receiving so much mercy from the Supreme Personality of Godhead Himself. But still your heart is not content. What's the matter? Then he told him how his heart was actually hankering for a young boy who wears peacock feather, who wears flower garlands, and who plays flute. And then Narad Muni said, okay, I can see that your attraction is for Krishna in Vrindavan. But in order to go to Vrindavan, you have to go back to the earth planet, to Bhoma Vrindavan, the Vrindavan on this earth planet. And in that Vrindavan, you have to perform Sankirtan. That is, with all the love of your heart, you have to call out to the Lord, Hey Govinda, Hey Gopal. And Gopkumar did that. He came back to the earth planet, to Bhoma Vrindavan, to the Vrindavan on the earth planet, and he performed Sankirtan, calling out to the Lord with all the love of his heart. And as a result of that, he was elevated eventually to Golok Vrindavan. So we can see from this that even from Dwarka one cannot enter into Vrindavan. Some rare personalities can go, like Uddhav. When he was sent by Krishna, he went to Vrindavan. But then how did he feel when he went to Vrindavan? When he saw the gopis, when he saw how deep is their love for Krishna is, his pride was smashed. Uddhav is the greatest devotee of Krishna in Dwarka. Uddhav is the greatest devotee of Vasudev in Dwarka. And he had some pride that he was the best of Krishna's devotees. But when he went to Vrindavan, that pride was shattered, seeing the love of the gopis for Krishna. And then what did Uddhav desire? He simply wanted to become a blade of grass or a creeper in Vrindavan. So some individuals, some rare individuals can enter into Vrindavan from Dwarka. But that's not the norm. Now, after performing his Vrindavan pastimes, Krishna considered that I revealed my very special Braja Leela. But how will anyone ever be able to enter into Vrindavan? Entering into Vrindavan is not going to be possible for anyone. This point has been very wonderfully explained by Nityananda Prabhu. After Nityananda Prabhu took Jiva Goswami in the parikrama of Navadvip,
then he sat down and started to instruct Jiva Goswami. And at that time, he made this point. And this point also has been explained in Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 6th chapter. He pointed out, Nityananda Prabhu told Jiva Goswami that Krishna considered, after revealing his Vrindavan pastimes, that how one will not be able to enter into Vrindavan. Because a devotee will serve the Supreme Personality of Godhead in Vaidhi Bhakti, following the rules and regulations of the scriptures. It is natural that a devotee will serve the Lord following the rules and regulations of the scriptures or according to Vaidhi Bhakti. And by rendering devotional service to the Lord following Vaidhi Bhakti, when one attains his perfection, then he will be elevated to Vaikuntha. One will naturally serve the Lord by following Vaidhi Bhakti, and he will be elevated to Vaikuntha. Now, from Vaikuntha, as I mentioned earlier, not only from Vaikuntha, even the topmost region of Vaikuntha, Dwarka, one cannot enter into Vrindavan. So Krishna considered that the devotee will go to Vaikuntha and will not be able to enter into Vrindavan. Therefore, Krishna decided to come as a devotee. And that devotee Krishna, when the devotee Krishna is served through Vaidhi Bhakti, following the rules and regulations of the scriptures, then the gate of Vaikuntha, gate of Vrindavan, will become wide open to him. The same point has been very wonderfully, very succinctly made by Srila Prabodhananda Saraswati. He is saying, Jatha Jatha Gaura Padara Vinde, Vinde to Bhaktin Krito Punna Rashi, Tatha Tatha Utsarpati, Ridi Akashmat, Radha Padambhoja Sudhambho Rashi. Jatha Jatha Gaura Padara Vinde, Vinde to Bhaktin Krito Punna Rashi. Due to heaps of pious activities, when one develops his attachment to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Padara Vinde, Tatha Tatha Utsarpati, accordingly springs forth from the depth of his heart, Radha Padambhoja Sudhambho Rashi, the nectar emanating from the lotus feet of Srimati Radharani. Jai Shri Shri Radha Gopinath ki Jai, Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Gaur Premanande. So, Krishna himself considered, after revealing his Vrindavan pastimes, how will anyone enter into his Braja Leela? And in order to make that facility, in order to make that happen, Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna appeared as a devotee. Now, what kind of devotee? What kind of mood of devotion? Radha Bhavaduti Shubalitang Naumi Krishna Swarupam. Krishna appeared with the bhav, with the mood of Srimati Radharani, with the internal feelings of Srimati Radharani. It is not only bhav. The bhav of Srimati Radharani is Mahabhav. Mahabhav Sarupini Radha Thakurani. Srimati Radharani is the personification of Mahabhav, the highest form, the most profound devotion
to the Supreme Personality of Godhead. So Krishna came assuming the Mahabhava of Srimati Radharani and Duti, the complexion of Srimati Radharani. Radharani, Krishna is Ghana Shyam. His complexion is like monsoon cloud. But that dark complexion here has been covered by the complexion of Tapto Kanchana Gaurangi. The complexion of Srimati Radharani, which is like the molten gold. Kumkumakta Kanchanabjo Gaurabohari Gaurabha. Srimati Radharani's complexion is so brilliant that the red of kumkum is when it is blended with molten gold, that color becomes ashamed in front of the complexion of Srimati, the color of Srimati Radharani's complexion. So assuming that complexion and assuming that mood, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he is appearing in this way. He is creating the good fortune for everyone to enter into Krishna's Vrindavan pastimes. And Vrindavan pastimes means relationship with Krishna as a friend, relationship with Krishna as the father or mother, or relationship with Krishna as a lover. Vrindavan means these three modes, these three relationships. Now the speciality of these three relationships, why they are not available in Vaikuntha, is because these three relationships are not possible if we recognize or if we are aware of the fact that Krishna is Jai Shri Shri Radha Gopinath ki Jai, Jai Shri Shri Gopal Jiu ki Jai, Jai Shri Shri Gaur Nitai ki. Therefore, in order to develop these relationships with Krishna, one has to forget that Krishna is God. Because relationship in friendship is possible only among equals. Now, who will consider himself to be equal to the Supreme Personality of Godhead? Now, this point I'll try to briefly just explain by giving a simple example. That to be a friend means deal with Krishna as an equal. Like cowherd boys, Krishna's friends, wrestle with Krishna sometimes. And the condition of wrestling is that the loser has to carry the winner on his back. Now, Krishna's friend in this wrestling bout defeats Krishna. And Krishna is the loser. So now the friend demands that Krishna will have to carry him on his back. And Krishna refuses to do that. Krishna says, no, I didn't lose. There was a banana peel and I slipped on that and you jumped on me and claimed that you defeated me. So a deep argument takes place, and then finally the friend forces his way onto Krishna's back. Now, in order to force one's way onto Krishna's back, you can well imagine that one will have to step onto Krishna's body, right? To climb onto Krishna's back, right? Now, will any devotee ever dare to go to the altar? I don't even have to say the rest. So you can see how impossible it is for a devotee to deal with Krishna in that way.
But in Vrindavan, that is how the devotees deal with Krishna. Similarly, well, at least among friends, the relationship is among equals. The friends become equal to Krishna. But consider parents. There the devotees have become superior to God and God has become inferior. Now how is it possible? That is why Vrindavan is so special. Vrindavan is so special because Krishna made this arrangement there through Yogamaya that everyone forgets that Krishna is God. Now here we have to understand this forgetfulness is not forgetfulness out of ignorance, but it is another kind of forgetfulness which is diametrically opposed to forgetfulness. And that forgetfulness is caused by intense love. One type of forgetfulness is due to ignorance. But this forgetfulness of Vrindavan is not forgetfulness out of ignorance. It is not that the devotees of Vrindavan do not know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. But due to the influence of Yogamaya, due to the intense love for Krishna, their attitude is, well, even if Krishna is God, so what? It's not important that Krishna is God. It doesn't really matter. Even if Krishna was not God, I would have loved Krishna the way I love him. The only thing that matters is love. And it doesn't matter what Krishna's position is. Whether he is God or not doesn't matter. What really matters is our love for Krishna. And that is what Yogamaya is. That is what Yogamaya is causing. Out of intense love, they forget that Krishna is God. And that is why Vrindavan is so special. Now, in order to create that good fortune for us, Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. And our business is simply to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Although he came as a devotee, but we have the understanding very clear that he came to enable us to love him. He came to enable us to develop our loving relationship with Krishna. And that is why Sri Chaitanya Mahaprabhu came. And our business is simply to serve him. And then someday, if our service becomes successful, if we achieve the success of that devotion to Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the gate of Vrindavan will open up to us. That gate of Vrindavan will open when in place of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will see Radha Krishna. Because it is Radha and Krishna that became one as Sri Chaitanya Mahaprabhu. And through our service to Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will see that this personality is the combination, is the unified form of Radha and Krishna, just as Ramananda Roy saw by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when we get to see Radha Krishna, then where are we? Then this is how we enter into Golok Vrindavan. So this is what Srila Prabhupada came to give. Sri Chaitanya Mahaprabhu came, gave this most wonderful opportunity for a living entity to enter into Golok Vrindavan, into Krishna's Braja Leela. And Chaitanya Mahaprabhu predicted that this Krishna consciousness movement would spread all over the world in every town and village. And that prediction today, although is impossible, but have become possible by
Srila Prabhupada. In a most miraculous way, within the short span of 10 years' time, he spread this movement all over the world. And we can see that Srila Prabhupada was sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu to fulfill his prediction. And it is by Srila Prabhupada's divine arrangement that somehow or other we have received this wonderful good fortune. Otherwise, Braja Prem wouldn't have been available to us. Only some rare personalities like Panditji Maharaj, who is a personality from Barsana, Radharani's own man, Krishna Brajvasi. Only to some individuals, rare individuals, this special prerogative would have been available. Not to us. But Srila Prabhupada has created that good fortune for us, and Srila Prabhupada is giving us the perfect understanding how to become engaged in Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Because serving Sri Chaitanya Mahaprabhu through Vaidhi Bhakti means serving Sri Chaitanya Mahaprabhu through Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu is served in a very special way. Sankirtan Yajna Kare Krishna Aradhan. This type of Aradhana is done through Sankirtan. Jaggai Sankirtana Prayoir Jajantihi Sumedhasaha. So this wonderful good fortune has been created by us, created by Srila Prabhupada for us. And somehow or other, due to our heaps of pious activities, we have been able to receive this good fortune. Now we must take full advantage of this good fortune and make our life successful. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Shri Shri Radha Gopinath ki jai. Shri Shri Giridhari Gopal ki. Shri Shri Gaur Nitai ki. Srila Prabhupada ki. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki. Shri Panditji Maharaj ki. Gaur Premanande Hari. All glories to the assembled devotees. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhaiva cha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Shri Bhakti Charu Swami Maharaj ki. वंदे राधिकां देवीं किशोरीं माधवस्वामिनीं श्यामां गजगामिनीं चैव त्रिभुवनमोहनमोहिनीं वंदे नवघनश्यामं पीतकौशेयवासुसं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम् यशोदानंद कुमारं बालकृष्णं नमाम्यहं मुहुर्मुहुः प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय यस्या कदापि वसनांचलखेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्रदुर्गं गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभान् भुवो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु वृषभान् भुवो दिशेऽपि। आप सभी भक्तों का अभिनंदन करते हुए श्री राधा रानी के जय जयकार से ही कर रहे हैं। आप सब लोग जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी ने अभी बहुत सी बातें बताई। कृष्णा कॉन्शसनेस, सुप्रीम गॉड हेड, श्री कृष्ण जिनको बड़ी बड़ी उपाधियों से भूषित किया जाता है, उन्हीं सुप्रीम गॉड हेड की ब्रज में कितनी इज्जत है, उसकी ओर हम आपको आकर्षित कर रहे हैं। जिनको अभी महाराज ने बताया था, जिनकी लीलाओं को छोटा सा बालक भी समझ करके आनंदित होता है और बड़े बड़े फिलॉसफर भी चक्कर काट जाते हैं, वो श्री कृष्ण जिनको भागवत में कहा गया है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, समस्त ऐश्वर्य, श्री, यश, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब के अनंत भंडार हैं। उन कृष्ण को ब्रज में गोपियां कैसे पुकारती हैं? ब्रज में गोपी गारी देवें भड़ुआ सौतेलो। इस तरह से उनका अभिनंदन किया जाता है और वो इसमें बड़े राजी रहते हैं। ये श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मा के लिए तेने ब्रह्म हृदय आद कवयो मुह्यंती यत सूर्यः, जो महाराज ने अभी बताया था, ब्रह्मा आदि भी जिनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से उनके लिए ब्रह्म का उपदेश किया, वो ब्रह्म श्री कृष्ण सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अतृप्त रहा। और उसकी तृप्ति कहां हुई? इस पावन ब्रज भूमि में। वो श्री कृष्ण इस ब्रज की रज का आस्वादन करने के लिए उस मिट्टी का भक्षण करते हैं, ब्रज रज का आस्वादन करते हैं। ग्वाल वालों ने यशोदा मां से शिकायत की, मां आज लाला ने माटी खाई है। मां ने डांटा, फटकारा, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई थी। कह दिया, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोले अच्छा मुंह खोल के दिखा। मुंह खोल के दिखाया तो सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। ईश्वर है आखिर। ईश्वर कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो करने योग्य है, न करने योग्य है, उसको भी करने में जो समर्थ है। कहा जाए सुई के छेद में से हाथी को निकालना है, हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण वो अथॉरिटी हैं कि सबको भी करने में समर्थ हैं। छोटा सा मुंह है श्री कृष्ण का, उसमें जब सारे ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं तो सुई के छेद में से हाथी निकालना तो मामूली बात है। उन श्री कृष्ण ने उसी अतृप्त अवस्था में ब्रह्मा की बुद्धि को भ्रमित किया। ब्रह्मा उनके ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा के ले गए, अनेकों रूप बनाए और उस ब्रज भूमि के एक एक चप्पा चप्पा को, एक एक इंची भूमि को अपनी जीभ से उन्होंने चाटा है। अन्य तीर्थों में तो श्री कृष्ण नंगे पांव चले हैं, लेकिन इस ब्रज भूमि को अपनी जिह्वा से चाटे। तो सोचिए कितना इसका महत्व है। अरे भाई, एक बार नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, बेटा सब लोग तीर्थ जा रहे हैं, हमारी भी इच्छा है 4 धाम कर लें।
कृष्ण बोले, बाबा मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए देता हूं। और यदि वो कहें कि मैं वो तीर्थ हूं तो मानना। तो ब्रज के अंदर सारे तीर्थ मौजूद हैं। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहां के तरु तरु पे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार 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 पे हरद्वार जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर के करेंगे क्या, अरे जानते नहीं हम बरसाने वासी हैं। एक बार हमारे महाराज जी से कुछ भक्त बोले कि महाराज हरिद्वार चलें, हरिद्वार। बोले हमें द्वार पे जाने की क्या जरूरत है जो हम महल में बैठे हुए हैं। अरे भाई, ये ब्रज भूमि का तो एक एक कण दिव्य है। इस रस के आस्वादन के लिए श्री कृष्ण यहां पर स्वयं इस ब्रज में आकर के अपने ऐश्वर्य को भुला करके रहे। ये ऐश्वर्य प्रेम का बाधक है। जहां ऐश्वर्य है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम में तो किसी प्रकार का कोई अंतराल रहता ही नहीं। अनेकों भगवान के अवतार हुए हैं। श्री राम वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, लेकिन वहां पर भी उन प्रेम की चार कलाओं का विकास नहीं हो सका। वो जन जन के इतने निकट में नहीं हो सके जितने के श्री कृष्ण हैं। देखो कृष्ण का कैसा विलक्षण स्वभाव है। यशोदा मैया नहलाती हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन कृष्ण को वो पसंद नहीं है। कृष्ण अपना श्रृंगार कैसे करते हैं? ब्रज की कीच में लोट करके। गोपाल आंगन कर दमे विहरसे, विप्राध्वरे लज्ज से। बछड़ों के खिरक में चले जाते हैं, गौओं के खिरक में गोबर में लोट रहे हैं, उस ब्रज की कीच को अपने शरीर में लगा रहे हैं, बिहर से बिहार करते हैं उसमें बड़े आनंद के साथ में। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से आवाहन कर रहे हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वात तिष्ठ दशांगुलम। वेद मंत्रों से आवाहन कर रहे हैं, लेकिन विप्राध्वरे लज्ज से वहां जाने में कृष्ण को अपना स्टैंडर्ड गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। लज्ज से वहां पर लज्जा आ रही है वहां जाने में। और ब्रूशे गोसुत हुंकृतई, बछड़ों के पास में चले जाते हैं, उनके कान में कह रहे हैं तेरी मां ने दूध पियाया। बछड़ा कह रहा है हूं। ब्रूशे गोसुत हुंकृतई, उसकी हुंकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और बड़े बड़े योगी स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम, स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। वे श्री कृष्ण दास्यम गोकुल कामनी सुकुरुषे, ब्रज की गोपियां उनकी दास्ता कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं अरे लाला तू हमको एक गोबर की हेल उछा दे। देखिए कैसा विलक्षण
बोले कहा देगी? बोले जितनी तुम हेल उचाओगे उतने लौंदा हम तुमको माखन देंगे नवनीत। कृष्ण राजी हो गए। बोले ठीक है, लेकिन उसकी कैसे गिनती होगी? बोले जितनी तुम हेल उचाते जाओगे हम तुम्हारे माथे पर एक गोबर का टीका लगा देंगे। बोले ठीक है। श्री कृष्ण ने 2-4 हेल उचाई। हेल समझते हैं ना, गोबर जिसमें उठाया जाता है। तो 2-4 उनको उचाया और वो गोपी आती, हेल डाल के आती और एक टीका लगा देती माथे पर। देखो प्रेम की कैसी अधीनता। अब श्री कृष्ण के मन में बेईमानी आई। उन्होंने क्या किया कि गोपी ने तो 2-4 टीका लगाए और कृष्ण ने 10-5 लगा लिए। अब गोपी ने आके देखा कि मैंने तो 4 हेले चाहिए, इसने तो जो 10 टीका लगा रखे। क्या विलक्षण श्रृंगार है कृष्ण का। यह है ब्रज का प्रेम। दास्यम गोकुल कामनीशु कुरुषे। उन ब्रज की गोपिकाओं की दास्ता कर रहे हैं कृष्ण और उसमें बड़े आनंदित हो रहे हैं। न स्वाम्यत्वम दत्तात्मसु। जो सब कुछ उनको अर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी स्वामी बनना उनको पसंद नहीं है। ब्रज गोपियों की दास्ता उनको पसंद है। कृष्ण जानी में तव पाद युगलम भक्त्यैक लभ्यम परम। कृष्ण तुम्हारे जो चरण हैं वो केवल एक भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। ये किसी न तो विद्वत्ता से न कला से। कोई भाई साधु बन जाए तो कृष्ण को वश में कर ले, बोले वो भी नहीं। न दत्तात्मसु, ऐसे इनके तो उनको जो है स्वामी बनना भी पसंद नहीं। कृष्ण प्यासे हैं, भूखे हैं तो एकमात्र प्रेम के। जो केवल कृष्ण से उनकी कृपा की याचना करता है और कोई दूसरी वस्तु न चाहे, बोले उसके वो वश में हो जाते हैं। हम लोग संसार की अन्य वस्तुएं उनसे जो चाहना करते हैं वो तो कल्प वृक्ष की तरह से हैं, जो चाहते हैं सो दे देते हैं, लेकिन वो ब्रज का प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम तो भाई तभी मिलता है जितना कि उनसे निष्काम रहा जाता है। कृष्ण नाम गुप्त धन जाने हरिजन संत। और कामना किए थे जो नहीं करे कामना, दिन दिन होए अनंत। ये कृष्ण नाम रूपी ऐसा गुप्त धन है जो कामना करने से तो घट जाता है और कामना अगर न की जाए तो उतना अनंत गुना होता जाता है। इस धन को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि निष्काम बन जाए। जो कुछ प्रभु कर रहे हैं उसी में हम राजी रहें, उसी में प्रसन्न रहें। कृपा श्री लालन जू की चाहिए। उसकी पहचान क्या है? कहते तो हम सभी हैं साहब कृपा चाहिए, कृपा नहीं है, लेकिन कृपा की पहचान क्या है कि वास्तव में हम कृपा चाह रहे हैं। इनने करी करी सो आछी अपने सिर पे सही है। जो कुछ ये कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसी को हमें शिरोधार्य करना है। हमको लाभ हो रहा है तो प्रभु की कृपा है, और हानि हो गई तो भी प्रभु की कृपा है। स्वस्थ हैं प्रभु की कृपा है, बीमार पड़ गए ये भी प्रभु की कृपा है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। इनने करी करी सो आछी अपने सिर पे सही है। और यदि हमारे कोई काम अनुकूल नहीं होता है, उसमें हम कुंद होकर के कह देते हैं साहब भगवान की ऐसी इच्छा थी, यानी हमारा कर्म तो ठीक था लेकिन भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। लड़के खूब मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में,
और अगर किसी तरह से असफलता आ गई, वैसे साहब हमने पढ़ाई तो खूब की थी, लेकिन चलो भगवान की इच्छा थी, यानी भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए? इससे भक्ति नष्ट होती है। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसों कछू न कहिए। उस समय अपना दोष सोचे कि कमी हमारी है, हमारे प्रभु की कमी नहीं। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसों कछू न कहिए, और सूर कछू कहवे की नाही, श्याम शरण वह रही। मूल है भक्ति का सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, उसके अलावा हम और कुछ न चाहें, तब तो भाई कृपा मिलती है। कृपा पाने का यही तरीका है। हमको ब्रज रस की प्राप्ति चाहिए, जिसके लिए कृष्ण भी लालायित रहते हैं, तो कब मिलेगा? जबकि हम ब्रज में आवागमन रखेंगे। ब्रजराज श्री कृष्ण, ब्रज और ब्रजवासी, इन सब में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो भेद समझते हैं उनको वो कृपा नहीं मिलती है। हम अपने नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, किस लिए? प्रेम बढ़ेगा। हम लोगों को चाहिए ब्रज में भी जाएं। जैसे आप लोग यहां पर, बड़ी खुशी की बात है, इतनी संख्या में गोपीनाथ मंदिर में आए हैं, क्योंकि गोपीनाथ जी से कुछ मन का लगाव है। गोपीनाथ जी हमारे प्रसन्न होंगे। जो रेगुलर रूप से आते हैं हर संडे को, अगर एक बार भी उनका मिस हो जाए तो उनके मन में थोड़ा कष्ट होगा। तो ऐसा हमारे मन में कष्ट उत्पन्न हो, ये कष्ट एक सुख है। हम ब्रज के प्रति लालायित रहें कि हमको ब्रज का रस प्राप्त करना है। ये तभी होगा जबकि आप ब्रज में आवागमन रखेंगे, उससे लगाव रखेंगे, ब्रज की सेवा की जाए। ब्रज के सरोवर हैं, ब्रज के तीर्थ हैं, उन सब की हम अपने घर मकान बनाने के लिए जैसे लालायित रहते हैं, ऐसे इन ब्रज के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए हम संकल्प कृत हों। मन में विचार करें, श्री कृष्ण का प्रेम था गौओं से। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, आगे पीछे उनकी गौएं रहती थी। एक बार यशोदा मां ने कहा, लाला तू जंगल में जाता है, नंगे पांव जाता है, जूती पहन जाया कर। बोले मैया मेरी गैया तो यानी नंगे पांव जाती है, इन सबको पहले जूता बनवा दो तब मैं पहनूंगा। कितना भाव है। अरे भाई, हम ये समझते हैं कि आप यहां पर कुछ ऐसी मजबूरियां भी हैं, हर व्यक्ति अपने घर में गाय नहीं रख सकता है। सेवा केवल शरीर से ही नहीं होती है। अपरिहार्य अवस्था में 3 प्रकार की सेवा बताई गई है, तनुजा, वित्तजा, मानसी। शरीर से सेवा उत्तम सेवा। फिर वित्त, अपने धन से समर्थ हैं, हम अपने घर में गाय नहीं रख सकते। हमको चाहिए कि एक गाय के भोजन के लिए जितना खर्चा हो, कम से कम उतना नियमित रूप से निकाल करके रखते जाएं, और जहां भी कहीं गौशाला है, जहां भी हम चाहते हैं वहां पर उसको दे दिया जाए। तो आपकी गौ की सेवा हो गई रोजाना, श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा। मानसी सेवा सबसे ऊंची है, लेकिन मानसी सेवा तब सिद्ध होती है जब पहले तन से और वित्त से, दोनों से सेवा की जाए। वो चोरी वाली बात नहीं है कि बस मन से सोच लिया और बस न पैसा खर्च करना पड़े और न हमको शरीर से हाथ लगाना पड़े, उसको मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती है। तो श्री कृष्ण एक तो भाई गायों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, और दूसरे ब्रज की सेवा से। ब्रज में हम आवागमन रखें, इससे श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी, उनका प्यार मिलेगा, उनका प्रेम मिलेगा, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमको ये दोनों चीज प्राप्त करनी है, तो हमको चाहिए उसके लिए समय निकाला जाए। इस संदर्भ में एक बात आपको बता देते हैं। हमारे यहां से बहुत डिवोटीज को पता भी होगा
प्रतिवर्ष ये जो दशहरा आ रहा है, इसके बाद त्रयोदशी से एक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जाती है हमारे मान मंदिर से, हमारे महाराज जी के संरक्षण में। सबसे पहली परिक्रमा जो हुई थी उसमें हमारे महाराज जी राधानाथ जी महाराज रहे थे। यह सन 88 की बात है। ये लगभग सन 71 से हमारे मान मंदिर के संपर्क में है। आप लोगों के संपर्क में तो पीछे आए हैं। हमारे मानगढ़ के संपर्क में श्री जी की कृपा सबसे पहले इनके ऊपर हुई है वहां से, और तब से इसका विकीर्ण हुआ है, तब से ये फैलाव हुआ है। तो जिनकी कृपा श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं, उन श्री राधा रानी की कृपा इनको पहले ही प्राप्त हो गई। और 88 में जब हमारी यात्रा पहली गई थी, उसमें ये चले थे, छाले भी पड़ गए थे हमें मालूम है, और लेकिन ये चलते रहे थे। मनोयोग के बड़े ये समझिए बहुत पक्के रहे। यानी उस समय शुरुआत में तो 20-20 किलोमीटर चले हैं, और उसमें ये नंगे पांव चलते रहते थे। उसमें छाले भी पड़ गए, खून भी निकल आए, लेकिन चलते रहे कि कांटे लगते। तो इन्होंने बड़े तप से वो किया है, और बड़े मनोयोग के साथ में। तो हमारे यहां से जो ये परिक्रमा जाती है, ये पिछले हर साल बढ़ती है कुछ ना कुछ। उस समय करीब 150-200 आदमी रहे होंगे जब महाराज थे, और पिछले साल 5000 से भी कुछ ज्यादा थे। ये यात्रा सबके लिए हमारी निःशुल्क है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है। अपनी इच्छा से कोई सेवा करते हैं, उसमें भी कोई बंधन नहीं, नहीं करते हैं उसमें भी कोई बंधन नहीं। और भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, पिछले साल तो समय समय पे जाते रहते हैं। आपके विश्वरूप जी हैं, इला ईश्वरी जो हैं, जब जब भी पहुंचते हैं ये भी खूब दवाओं की खूब सेवा करते हैं। दिन रात इनको घेर लेते हैं पेशेंट्स आकर के, क्योंकि भाई इतना बड़ा समूह रहता है, किसी की सेवा किसी ढंग की होती है, किसी की सेवा किसी ढंग की होती है। लेकिन वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सब सेवा भाव रखते हैं। केवल पैसे की सेवा एक सेवा नहीं होती है। ये समझो कई सौ जगह पर हमारी उस यात्रा के प्रभाव से भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रभात फेरियां चल रही हैं सैकड़ों जगहों पर। एक महात्मा है, उन्होंने तो 200 जगह प्रभात फेरी चला रखी है। उनके लेटर्स हम लोगों के पास में आते हैं, और ये समझिए कि एक बड़ा भारी एक क्रांतिकारी कदम चल रहा है। भगवान नाम से बढ़कर के और कोई दान क्या हो सकता है? सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ जीवा भय प्रधानस्य न कुर्वीरन कलाम अपी, भागवत में कहा है। सब वेद पढ़ने का फल, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, दान पुण्य करने का जो फल होता है, वो किसी भी एक व्यक्ति को भगवान नाम की ओर लगा दिया या भगवान की शरण में लगा दिया जाए तो बोले उसके समान कोई यज्ञ नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। राधानाथ महाराज कितने लोगों को लगा रहे हैं। साधु संतों का यही कर्तव्य होता है, भगवान की शरण में लगा दिया जाए। आप लोगों को भी ये चाहिए, जो भी आपके संपर्क में आए, आप भी चलते फिरते यज्ञ कर सकते हैं। किसी को सद्विचार दे दिए, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपने एक ही बात सिखा दी कि भाई बिना भगवान का भोग लगाए कुछ खाओ पियो नहीं। और वो कोई कठिन नहीं है। जो कुछ भी हमको खाना पीना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार महामंत्र बोल लो और उसके बाद में भोजन शुरू करो। आप लोग तो सब डिवोटीज हैं, सब करते ही हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके जो संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, सेवा करते हैं निष्काम भाव से, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनको भी चाहिए कि जो भी पेशेंट उनके संपर्क में आते हैं, उन पेशेंट्स को ये शिक्षा दें कि अगर तुम जो है भगवान नाम लेकर के भोजन करोगे तो तुम जल्दी ठीक होगे। हमारे यानी बरसाने में एक बड़ी सुंदर बात है
कि आप लोगों के यहां से एक कैंप लगाते हैं। वहां पर एक बड़ी सुंदर व्यवस्था रहती है कि हर समय 24 घंटे भगवान नाम कीर्तन रहता है। ऐसा किसी कैंप में नहीं होता है। और उसका प्रभाव यह है कि जितने भी यहां के ऑपरेशंस हुए हैं अब तक, वो सब 100% एकदम सही हुए। तो ये मेरा कहने का भाव था कि जिस प्रकार से वहां पर है, तो आप लोग जितने भी हैं, हर एक के अलग अलग फ्रेंड्स के सर्किल्स हैं, उन सब में आपको इस बात की प्रेरणा देना चाहिए कि भाई देखो, कम से कम एक ये नियम तो बना ही लो, बिना भगवान का भोग लगाए खाना पीना नहीं है। ऐसा क्यों? शास्त्रों में लिखा है, बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंगते नरः श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्या समम। जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते पीते हैं, चाहे भले वो कुछ भी खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, बोले श्वान विष्ठा समम चान्नम, वो अन्न श्वान विष्ठा की तरह से खाना पीना है जो बिना भोग लगाए खाते पीते। और तोयम सूर्या समम, जल आदि पीना, जितने भी लिक्विड्स हैं, मिल्क है चाहे जूस है, कुछ भी ले रहे हैं, बोले सूर्या सम, वो मदिरा की तरह से पीना है। तो भाई ऐसा अधर्मी नहीं बनना है। आप लोग वैष्णव हैं, आप तो खैर करते ही हैं, लेकिन अपने संपर्क वालों को भी ऐसी शिक्षा दीजिए। सद्विचार देना यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ का फल आप सभी लोगों को लेना चाहिए। जिस वस्तु का दान किया जाता है, वो वस्तु उसको कई गुनी मिलती है। धन का दान करने से धन की वृद्धि होती है, विद्या का दान करने से विद्या की वृद्धि होती है, दूसरे को सम्मान देंगे तो सम्मान बढ़ेगा, दूसरे को गाली दीजिए तो 10 गाली भी पड़ जाएंगी। तुरंत चमत्कार देख लो। अरे भाई, दूसरे को भक्ति दोगे तो भक्ति बढ़ेगी, भगवान नाम दान करोगे तो भगवान नाम की वृद्धि होगी। तो आप सब लोगों के लिए ये दान अवश्य करना चाहिए। इन मैटीरियल चीजों के संग्रह से कोई धनवान नहीं होता है। तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जको राम नाम धन होए। सच्चा धनी तो वो है जिसके पास में कृष्ण नाम रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है। उसी धन का आप संग्रह करें और सच्चे धनी बने, ब्रज का प्रेम आपको प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में समय भी काफी हो गया है, 15 मिनट दिए थे, शायद ज्यादा ही हो गए होंगे। जय श्री राधे। फिर से आपसे यही कहेंगे, आप ये समझिए श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमारा इधर आना तो दूसरे कारण से हुआ, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भाई राधा रानी ने हमको बुलवावा भेजा है, आमंत्रण भेजा है, उनकी कृपा हुई है, और आपको यात्रा के लिए कुछ समय निकालने के लिए संकल्प कर ही लेना चाहिए। जय श्री राधे।